Shall we start the class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so in the previous class, we were studying about functions and different aspects of function we tried to cover. Uh, Continuing that, we'll start with a program. Uh, it's just for practice purpose. Uh, let's say a question has been given. Write a program to input two floating type numbers and show their sum in integer type. Okay, so it's a very basic question. Again, question again mention a function, but we are trying to make these things two functions. Uh, so it is asking कि we have to create a program जहाँ पे लोग दो input लेंगे numbers of float type और जो result आएगा हमारा उसको हमको int type में दिखाना है in int type. Okay. So basically, somewhere down the line, we are trying to perform typecasting, and that to an explicit typecasting where we are shifting from a higher order data type to a lower order data type. And in that sense, suppose if we are receiving a result like 10.58, so finally, since we are converting it into int type, so I'll only receive 10. So basically, in explicit typecasting, we do have a loss of data, inconsistent data, we say. Okay, but function में इसको क्या implement कर सकते हैं? Let's see. Uh, def, I'll name the function name as fci, float conversion to integer. We'll take two variables n1, n2, colon. Sum equals n1 plus n2. We'll try to return in sum. So I'll try to input two numbers f1 of float type f1 equals float input enter first number. Okay, I'll cut it short. Variable f2 equals float
in both. Second number. Result equals, I'll call the function fci and pass on the variables f1, comma f2 and print down the result. Print. Function name would be a result, right? Let's run this program once, then I'll explain it. Okay, so it says first number, I'll give 2.67, the second number 4.99. Okay, तो बेसिकली उसने ऐड तो किया सही से, लेकिन 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, बट सिर्फ 7 शो करो बिकॉज वी हैव परफॉर्म टाइप कास्टिंग एंड the result of two float type numbers being added up will have resulted in an integer type because we have done the type casting. Okay. Now, but how does this function operate? ये तो एक एग्जांपल समझ में आया, कल इस चीज को आई थिंक थोड़ा बताए थे, आई और डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं. हाउ डज, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई मेन मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, राइट? Never we are writing public static void main or void main int main, something like that. So main term is missing. How does the interpreter understand that this part is related to function and this part, yeah, from this line the main method needs to be started, if at all we have written somewhere that it is a main method. So basically, uh, if you see our first line is def fci n1 comma n2. Function reads, sorry, interpreter reads this line, and the moment it reads this def, we had earlier discussed that def is relatable with function. With whenever we are creating a function, we start it with def, the keyword def. So the moment when the interpreter reads this word def, it understands that a function has been defined over here. Okay, so it simply skips these lines. Which lines? The next lines which are indented, है ना? जो lines indented है उसको समझ में आ गया कि ये सारे lines जो इस function की property है, function की body है, it belongs to function. Function में हम उसी वक्त आएंगे जब function को call किया जाएगा. Yes, we have written the function initially and then we have moved forward with the remaining aspect of the other part. But whenever this keyword is received by the interpreter, it understands that a function has been created and it should return back to this line only when the function is being called. So it is looking for a point where the function is being called. So it skips the lines which are associated with the function, okay, the body of the function, these lines. It comes to this part. Now, although we haven't mentioned that it is a main method, okay, but on the backdrop of it, it understands that understanding ये है कि this line is of main function
Okay, so it will treat it as main dot one is just for a reference. Okay, ये main method का line number 1 है. Next line is main dot 2 and so on. So it enters into this aspect. दो वेरिएबल दिख रहे हैं, उसमें वैल्यूज इनपुट करने बोला गया है. इट टेक्स इनपुट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप दैट इज फ्लोट. Next, another variable is there that is waiting, or that in its body we have, not body but the result part, we have called upon a function fci f1 comma f. Now the interpreter searches for whether do we have a function by the name fci having two parameters for f1 and f2 values to be associated with them, and then it receives that okay, we have created that function. So the interpreter takes these f1 and f2's values and put it in the n1 and n2 respectively. So whatever is the value of f1 will be received by n1, whatever is the value of f2 will be received by n2. And once the value of n1 and n2 are received, the body of fci function will start working. n1 and n2 को add किया जाएगा, sum में variable में result throw किया जाएगा, and the same result would be returned back, but this time the variable or the result is being converted into a specific different type, that is int. So till yesterday we were returning the same value that we were receiving, जिस तरह का मिल रहा था. We were least concerned about which type of value we are receiving, whether it is of int type, float type, or whatever type it may be. We were least concerned. Our only motive was कि हाँ प्रोग्राम में रन कर जाए और आउटपुट सारे लाइन एग्जीक्यूट कर जाए क्लियरली. बट इफ आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू स्पेसिफिक टाइप, सो वहां पे हम लोगों ने टाइप कास्टिंग का यूज किया है. वो कहाँ पे, जहाँ पे रिटर्न करते हैं यूजुअली. जावा में हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप कास्टिंग जो हो रहा था वहां पे वेरिएबल्स से कैलकुलेट या कंप्यूटेशन में जब इन्वॉल्व हो रहे थे, एंड उस पॉइंट पे जब वेरिएबल एक रिजल्ट जो निकल करके आया उसको हम एक वेरिएबल में डाल रहे थे, तो वहां पे भी टाइप कास्टिंग करते थे. व्हाट आई मीन टू से इज दैट आई शुड हैव रिटन इट ओवर हियर int n1 comma n1 plus n2 एंड देन रिटर्न सम कर देते. ठीक है ना, उसको भी एक बार रन करके देखते हैं. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. तो वहां पे भी काम कर रहा है, रिटर्न पे भी हम लोग लेते हैं, तो वहां पे भी इक्वली वैसा ही काम कर रहा है. ओके, now let's move forward, and yesterday in the last closure I had informed that we will go for scope of variable. What exactly do we understand by the term scope of variable? Any idea what do we mean by scope of a variable? सर जैसा पहले के लैंग्वेजेस में पढ़े हैं, एक वेरिएबल का स्कोप बोले तो एक लाइफ भी बोल सकते हैं. अगर किसी फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया हो तो वो उसी फंक्शन तक काम करते हैं. आउटसाइड दैट फंक्शन वो फिर वो वर्क नहीं करता है. ऐसा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल जो पहले पढ़े थे. Exactly. लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल नाम सुने हैं. ठीक है. तो with reference to this program, this is available over here. Can you say, what type of variables do we have over here? Do we have any local or global variables?
सर इसमें कहना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो रहा है मेरे लिए क्योंकि उसमें क्या था कि मेन मेथड के अंदर भी जो यूज हो रहा है और फंक्शन में तो वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल रहता था, बट इसमें तो ऐसा कोई मेन मेथड है नहीं, ये सारे प्रोग्राम में मतलब ऑल ओवर काम कर रहा है तो मे भी शायद ग्लोबल वेरिएबल हो। So you mean to say that F1, F2, sum, N1, N2, all these are and result, ये 6 वेरिएबल जो है सारे ग्लोबल वेरिएबल है। सर N1 N2 फंक्शन के विद इन वो डिफाइन है तो लोकल वेरिएबल, हाँ वेरिएबल सिर्फ वो लोकल है क्योंकि फिर F1 F2 जो हम लोग दोबारा से ले रहे हैं तो उसका वैल्यू केवल वहां पास कर दे रहे हैं। ओके, तो ये लोकल है या ग्लोबल है? विच वन सर? ऑल द वेरिएबल। सेम्स लाइक सर ग्लोबल टाइप। ओके, सरिता आपका आंसर? No idea, sir. जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, एक रेफरेंस देते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड रेफरेंस और एग्जांपल टू बी कंसीडर्ड। रिसेंटली आई वेंट थ्रू द बेसिक्स and it gave me another book gave me a very good example reference of what local and global means. Uh, let's take an example of an amusement park. वहाँ पे multiple rides होते हैं and before we enter we have to purchase a ticket and it's an expensive ticket, let's say 500 rupees, and once we purchase a ticket of 500 rupees it mentions that all rides are free. Okay, all rides are free. uh, we enter into the arena and we take each ride one by one. Then we visit a ride and once it gets completed, we come out of it and we want to go for a second ride once again. We enter into the queue and once the ticket checker checks, it says, sir, एक ही बार allowed है. ठीक है ना, एक ही बार allowed है. Now if you want to revisit that ride, सर आप अंदर से यहाँ का जो लोकल काउंटर है ना वहां से 40 रुपए का टिकट कटा लो. Okay, so when I purchased that ticket, it was a global value. It was applicable for all the rides. And once I completed all the rides once, if I wish to go for another ride for a second or third time, I need to purchase that ticket from a local, from the near, operator which is operating that ride, isn't it? So again, I'm purchasing a local ticket. I'm purchasing a local ticket. That ticket is not valid for another ride or at any other different ride. So in that perspective, if you see, if we, जैसा कि ट्रेनर ने भी बोला कि सर यहाँ पे क्योंकि मेन मेथड का कुछ स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, वेदर इट इज मेन मेथड है भी या नहीं यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, वैसे में बोलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है. अगर थोड़ा सा स्कोप या हम लोग बना देते कि भाई हाँ यही मेन मेथड है तो शायद बेहतर तरीके से आंसर किया जा सकता था. आई थिंक माई कोड विंडो इज नॉट विजिबल. जस्ट स्टूडेंट आगे. ओके, इट माइट फ्लिकर. ओके, समटाइम्स कोड विंडो आना जाना थोड़ा करेगा
line is a bit disturbed today. ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर हम देना चाहेंगे। एंड आज ये प्रोग्राम को जब एक्सप्लेन करें तभी हम बोलते हैं कि दिस पार्ट बिलोंग्स टू द मेन मेथड, ऑल्दो वी हैव नॉट मेंशन्ड anywhere specifically that it is the main method, but this or again it is as it is not mentioned, जैसे कि यहाँ पे हम मेंशन किया ना FCI एक फंक्शन का नाम है, अगेन एक फंक्शन बना रहे तो उसका कुछ नाम देते, बट ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, एक बिना किसी फंक्शन के स्कोप के मूव कर रहा है, isn't it? इसका कोई स्कोप दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऊपर 3 लाइन का हमको स्कोप दिखाई दे रहा है, कैसे? यहाँ लाइन में फंक्शन का नाम लिखे, कोलोन दिए, तो ये मेरा बॉडी से या स्कोप उसका स्टार्ट हो गया उस फंक्शन का। द मोमेंट आई कम आउट ऑफ लाइन नंबर 11, the scope of that FCI function ends. So whichever variables I have created inside the FCI function are local to that function. So there are 3 variables, n1, n2 and sum. ठीक है, these 3 are local variables. Local to what? Local to the given function FCI. जो भी फंक्शन का नाम होगा उसके अंदर या उससे एसोसिएटेड जितने भी वेरिएबल्स होंगे, those will be local to that function. The moment you come out of the function, all the variables values become dormant, inactive, inaccessible. Clear है? Yes, sir. Yes. Now, since the scope of these lines are not mentioned कि ये किस function को belong कर रहे हैं, so the interpreter assumes it that it belongs to the main method. आप बुक्स में भी अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे खोजोगे, you'll find के उसको ना वो लोग इनडायरेक्टली मेन मेथड का ही हिस्सा मान करके चल रहे हैं। Okay, so considering that this part belongs to main method, these variables have global access. These variables have global access. How come global access? See, when we are taking these inputs and passing down the variables value to the function, so in that perspective, these are global values. It might be passed down to few more functions as well. लेकिन फंक्शन के अंदर जो n1 n2 वैल्यूज अभी हम लेकर के चल रहे हैं वो तो उसी फंक्शन के लोकल में है, ठीक है ना? तो ये हमारा ग्लोबल और लोकल हो गया। I'll give you a reference to that. Just give me a moment. हम फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक पेंट विंडो बनाएंगे। ये जो टॉपिक हम कवर करिए लग रहा है थोड़ा सुनने में, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग पढ़े तो चाहे सी में हो या जावा में, इसको कंपैरेटिवली इजी है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वहाँ पे एज पहले मेंशन होता है हमारा मेन मेथड था, एवरी फंक्शन वाज क्लियरली डिफाइंड, तो उसके बेसिस पे हम लोग assumptions है, क्लैरिटी वहाँ पे था, विजन था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उस चीज को दूर करने के लिए एक ना सेट सुपर सेट सबसेट वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, तो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, in the meantime, I'd also like to copy the code ठीक है, तो आप कॉपी डाउन द कोड, वो विजिबल हो जाएगा। कोड कॉपी कर लिए हैं,
हाउ शैल वी प्रोसीड? तो एक बार फिर से उसका ट्रांसलेशन देखते हैं. Start with the line number 1, DEF, FCI, N1, N2. जैसा हम बताए कि DEF कीवर्ड को पकड़ता है. It understands the function has been created over there. So skip the body of the function and go to the next part. Right. तो ये लाइन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमारा एक स्पेस चला गया. एक्सक्लूड दैट. लाइन नंबर 5 में अगर हम आते हैं, वेयर F1 इक्वल टू फ्लोट करके लिखा हुआ है. ठीक है. तो F1 equals float first number. The moment we write, ये क्या कर रहा है? थोड़ा लार्जर साइज का बना दिए है. So at this point, line number 5 जो है हमारा F1 equals float into first number. एग्जीक्यूशन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड a global environment is created where we have F1 as our first variable जो कि इस global environment में create हो रहा है. So let's suppose this whole circle or oval shape is our global environment. यहाँ पे हमारे पास पहले F1 नाम से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे कुछ वैल्यू जाएगा. ठीक है. हम इक्वल टू देकर के रहते हैं. अब अज्यूमिंग के वहाँ पे एक वैल्यू जा रहा है. ओके. नेक्स्ट लाइन अगेन एक और नया बन रहा है. तो F2 यहाँ पे क्रिएट हो जाए. उसके अंदर भी हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं. टेक एन assumption of any such value. Let's write it down. 12, sorry, float title 12.40 and 8 9.87. ओके. तो पहले ये बन गया हमारे पास. नाउ व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं? FCI फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. FCI F1, F2. तो यहाँ पे जैसे फंक्शन को इन्वोक किया गया, उस फंक्शन के रेफरेंस में हम लोग लोकल वेरिएबल्स बना रहे हैं N1 एंड N2. Isn't it? Again वो विजिबल हो जाएगा. So N1 and N2 are being created with reference to the local function FCI. So with reference to that function, N1 and N2 will be the local variables, right? So I'll create one more environment inside this itself, and उसके अंदर we'll have yes, sorry I got disconnected now. Just hold on.
पेंट विंडो विजिबल है? Yes, sir. Okay. So yeah. Okay. So here we see F1 F2 क्रिएट हो गया फंक्शन को जब एफसीआई को कॉल किए हैं और दो पैरामीटर्स पास किए हैं. FCI function receives under the name of N1 and N2 variables. So those variables need to be created. Now these variables, since belonging to a user-defined function, are local to that function. That's why a subsegment has been created under the local environment, where we have N1, which is again equal to 12.40, because same value of F1 will be provided, and we have N2 which is equal to 9.87. Okay. Next line में क्या होगा, sum int N1 plus N2. So sum variable जो है जिसमें भी बन जाएगा ये भी, और इसमें जो भी रिजल्ट हमारा स्टोर हो रहा है दैट इज N1 plus N2 होकर के रिजल्ट स्टोर हो जाएगा. And then it will return the value of sum to the variable result, right? To the variable result. So result variable again back coming back to this part, it will be created here. Result, right? So this is how okay, complete कर लेते हैं. Result will be equal to sum. Okay, बस हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखें, जस्ट डोंट टेक इट इन लिटरल वे के रिजल्ट और सम ये कैसे लिख दिए इक्वल कैसे कर दी, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वही वैल्यू यहाँ वेरिएबल रिजल्ट को मिलेगा, एंड फॉर दैट रीजन आई हैव रिटन रिजल्ट इक्वल टू सम. Okay, so what is happening over here is that when the value of sum is being returned to the caller function or to the caller method, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड पढ़ता तो वो समझ जाता कि टर्मिनेट हो गया फंक्शन, एंड इट कम्स आउट ऑफ द एफसीआई फंक्शन. So again, when it is sending the variable's value, there has to be a variable receiving that value. So result variable हमारा create हो गया. But this result variable belongs to the does not belong to the FCI function, rather it belongs to the global aspect. So वहाँ पे global वेरिएबल रिलेटेड टू द मेन फंक्शन वो क्रिएट हो जा रहा है हमारा रिजल्ट नाम से, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जा रहा है. Okay, so basically in the local global environment we have F1, F2 result and print statement. Four lines are there which are operating globally, and then once it gets terminated the entire program comes out of the global environment and program ends. Okay, ये तो बात यहाँ पे एक फंक्शन बनाए थे समझ में आया. कंफ्यूजन थोड़ा और इंक्रीज अगर करना चाहे कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है इसको समझते हैं. गो बैक टू द कोड विंडो. Delete this part. Now, the created function calsum. It has three variables A, B, and C. Sorry.
scope, enter. S equals A plus B plus C, return F. Fine program main this calculum function ends. We start with the average, again having x, y, and z. Avg equals or rather sum equals, we call calculum function, pass down x, y, and z, and then return sum divided by 3. Let's go to the global aspect. Num1, cut it short, n1 equals input first value n2 equals, simply copy it out, and then okay. Now this is a bit complicated. Here we have used multiple functions, but one function is dependent upon the other function. ऑपरेट कैसे करेगा देखते हैं. n1 क्रिएट होगा, एक वैल्यू इनपुट करेंगे इंटीजर टाइप का, n2 अगेन एक वेरिएबल क्रिएट होगा इंटीजर टाइप का, n3 अगेन तीन वेरिएबल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ऑफ इंटीजर टाइप. यहाँ तक तो नॉर्मल है. Print statement is there where inside the print statement I have called an average function, okay, and I have passed down the value of n1, n2 and n3. The moment compiler sorry interpreter reads it out, again वो global body एक बनाएगा, जैसा हम अभी डायग्राम देखे थे. एक global set बनाया है n1, n2, n3 का, और उसको पास कर दिया गया है या उन वैल्यूज को पास किया गया है to the average function. So the interpreter looks for the name average function, and it finds that yes, an average function is being created. So the same value of n1, n2 and n3 are passed down to x, y and z respectively, and since we need to calculate the average, we also need to compute the sum. Inside the average function, we find that a sum named variable is there, which is again waiting for another function calsum. So inside the user defined function average, we are calling another function by the name calsum, and again same value of x, y and z are passed to calsum, having three parameters a, b and c. तो एक्चुअलिटी में हुआ क्या, n1, n2, n3 हमारे एक्चुअल वैल्यूज हैं, उसको हमने एवरेज फंक्शन को पास किया, एवरेज फंक्शन उनको रिसीव करके फिर उन्हीं वैल्यूज को वो पास कर दे रहा है एक दूसरे फंक्शन को.
So again, this part is being received. Okay, so ये काम कैसे कर रहा है? We have one global environment जहाँ पे N1, N2, N3 है. Then we have local environment for average function, एक subset दिखाई देना चाहिए. And inside that subset we have one more subset which is for calculum function. तो calculum function के अंदर हमारे पास A, B, C and S 4 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 3 का वैल्यू तो हमको रिसीविंग में मिल रहे हैं. Let's say I take 10, 20, 30. Provided the value of n1, n2, n3 are 10, 20, 30. Same value is being passed to average function, so x, y, z also becomes 10, 20, 30. And the same values are passed to calculum function, so a, b, c also becomes 10, 20, 30 respectively. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा लार्जर सेट जो है वो n1, n2, n3 ये 3 वेरिएबल्स को लेकर के बना है. उस सेट के अंदर एक छोटा सबसेट बना है बाय द नेम एवरेज. उसके अंदर हमारे पास x, y, z एंड सम 4 वेरिएबल्स हैं. And again we have calculum function जिसके अंदर again 4 वेरिएबल्स हैं a, b, c and s. So we have a superset, inside that we have a subset of average, and inside that subset we have one more subset of calculum function. So global variable, local variable and local variable. So x, y, z actually देखने में कुछ फर्क है नहीं यहाँ पे, honestly speaking. वही n1, n2, n3 जो हम पास कर रहे हैं वही सारी जगह फ्लो हो रहा है. बट समझना ये है कि फ्लो ऑफ डेटा जो हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यस, आंसर गेस करना आसान है कंपैरेटिवली बिकॉज सेम वैल्यूज को लेकर के लोग काम कर रहे हैं. बट हाउ द थिंग्स आर फ्लोइंग एंड ऑपरेटिंग, ये तो बहुत छोटा सा एक रेफरेंस लिया गया और बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिए जिसमें इस चीज को समझना और समझाना आसान था. If we make it a bit more complicated where we have several functions where each function is being called from another function, तो वो लिंकअप करना और उसको विजुलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर एवरीवन. ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू लुक आउट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स. उसके एस्पेक्ट से एक है. I think I got disconnected. Just give me a moment. Okay. Any doubt till this point? Functions का concept यहाँ तक clear है? Yes, sir. एक और important aspect जिसको हम जानते भी हैं, that is recursion. A scenario where a function is being called from within its body. एक बार उसको main method से किसी function से हम लोग call कर देते हैं, and that function keeps on repeating itself from within its body. एक तरह का रिपीटेटिव काम वो फंक्शन या रिपीटेटिव कॉल रिसीव करता है. ये कब तक चले? जब तक कि उसका बेस कंडीशन वैलिड है. सो वी हैव टू एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अ रिकर्सिव फंक्शन. वन इज द बेस कंडीशन where the condition is being tested whether the criteria is true or false. So after a certain number of iterations or a certain number of executions of that function, the function must get terminated. वो बेस कंडीशन जो फॉल्स हो जाना चाहिए. सो वी मस्ट कंस्ट्रक्ट अ बेस कंडीशन इन दैट रिगार्ड. रिकर्शन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, यूजुअली विजन ही ये रहता है कि प्रोग्राम का आउटपुट सही आए, तो उस पर ज्यादा एम्फसाइज
कर देते हैं, but rather equal emphasis should be given to the base condition only, because if your base condition is not correct, either वो ओवरशूट कर जाएगा या अंडरफ्लो करके रह जाएगा. ओवरशूट मतलब कि इनफाइनाइट टाइम्स वो रन कर जाएगा या मोर देन द रिक्वायर्ड टाइम रन कर जाएगा, तो आउटपुट करेक्ट नहीं मिलेगा. अंडरशूट कर जाना मतलब कि जितना टाइम चलना चाहिए तो उससे कम ही रन करके वो टर्मिनेट कर दिया एब्रप्टली. तो दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन है. So we must also put good amount of consideration on the base condition. Uh, एक रेफरेंस देखते हैं जल्दी से. और ओके, सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. आसानी से बन जाता है. रिकर्शन से भी बस एक बार क्विकली देखते हैं जस्ट टू हैव कि क्या कुछ डिफरेंट है एज कंपेयर टू the previously understood program. The reason why I'm asking this is because if you try to find that whether do we have the concept of function overloading in Python. Now since Python is an object oriented based language, so most of the times the answer should be yes. Function overloading is supported or is valid because it's an object oriented programming, so कोई issue नहीं होना चाहिए. But no, it's not that much crisp and clear. Yes, हाँ ये होता है. So it's not directly supported. Remember, we used to have the conversation that in inheritance in Java, the concept of multiple inheritance is not supported. But again, by including the interface part, we made it possible that yes, Java can create or can handle multiple inheritance also. So similar to that, if you ask or find out in any books or PDFs, they don't say that okay, in Python function overloading जैसा चीज कुछ है. But there are other ways through which we can access. और उसका एक एग्जांपल हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे. रिमेम्बर सिंपल इंटरेस्ट वाला एक प्रोग्राम बना रहे जहाँ पे 3 पैरामीटर्स लिए थे, जहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी था और 2 कांस्टेंट टर्म्स थे, और उसमें से वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितना ले रहे थे वो ऑपरेट कर रहा था. बट अगेन हैविंग सेड दैट ओनली वन टाइप ऑफ calculation was being performed at a single point of time. So yes, that can be considered as an example of overloading. But अगेन उसमें सेम प्रोग्राम को हम लोग या सेम पीस ऑफ कोड को ही एक ही बार बनाए थे. नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैंडल होगा उसको सेपरेट लेकर के चल रहे हैं. ठीक है ना. बट एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या बोलता है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होगा, सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स है. Let's say I've created a function sum, so again a function by the name sum should be created, but only the number of parameters or the types of parameters must vary. Now since हम लोग तो डेटा टाइप यहाँ मेंशन कर ही नहीं रहे अपने वेरिएबल्स का, है ना. अपने डेटा टाइप तो मेंशन ही नहीं कर रहे हैं. तो इसमें ये वाला इशू एक आ जाएगा. जब हम डेटा टाइप मेंशन नहीं कर रहे तो डिफाइन कैसे किया जाए. On that note, it's hard to say. या कई जगह पे तो ऐसा लिख भी देता हुआ था इंटरनेट की कि पाइथन डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है. ट्राई टू फाइंड अ गुड आंसर, ट्राई टू मेक अ गुड नोट ऑफ इट के whether it supports function overloading or not. If yes, how?
if not why and what are the alternatives to that. ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन या असाइनमेंट दे रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा डीप डाउन रिसर्च करना पड़ेगा. क्वेश्चन इज, डज पाइथन सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग? If yes, how? Write a program and explain it. If not, then why not? What is the problem with that? And do we have any other alternate solution to that? Question समझ में आया सबको? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Sarita, I'm unable to hear you. आवाज आ रही है सर? Yes, sir. आवाज तो आ रही है. Okay, so we'll take it as a yes and move forward. तो रिकर्शन का एक एग्जांपल या फिर Yes. क्विकली देखते हैं हम लोग. तो क्रिएट अ फंक्शन टैग नाम से ले लेते हैं. Okay. Function's name is fact. I'll pass it down the variable num. Right. ठीक है, इसको एक बार रन करके देखना था पीसी. Input a value, take it as 5. Save. Given factorial given number is 120, rightly so, and hello world. तो प्रोग्राम रन तो कर रहा है सक्सेसफुली. ठीक है,
What about this base condition and all? See, the concept still remains the same. You don't have to worry about it कि कुछ नया आ गया है. जहाँ पे दिख रहा वहाँ पे हम लोग इस चीज को डिस्कस कर ले रहे हैं. We have the base condition, right? This is the base condition. So we have to ensure that the base condition जब ये active होता है तब हमारा वो काम कर रहा है. ओके, तब तक वो काम कर रहा है. अदरवाइज ये क्या है, रिटर्न करते जा रहा है. सॉरी, उल्टा बोला. इफ द बेस कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है ना, तो क्या करना, रिटर्न रन करके टर्मिनेट कर जाएगा. ओके, तो वी हैव टू इंश्योर कि जब तक ये रन कर रहा है बेस कंडीशन थोड़ा देर बाद एग्जीक्यूट हो करके, ये जब उसका टाइम है तभी एग्जीक्यूट हो जाए और वो रिटर्न वन कर दे. सो इफ यू सी द एल्स पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, n into again the function is being called by removing the value. कोड फ्लिकर करेगा तो ठीक है. n रिटर्न बोल रहा है, रिटर्न n into fact of n minus 1. So it is decrementing the value of n by 1 each time it encounters the function call. और ये 5 से हम लोग शुरू की तो 5 into fact of 5 minus 1. तो जो भी आया उसे कंप्यूट कर नहीं पा रहा पूरा, बिकॉज वो फंक्शन फिर से रन करेगा. तो पार्शियली एग्जीक्यूट होगा क्या रह जाएगा, 5 into 5 minus 1. देन अगेन फंक्शन कॉल हुआ, चेक किया, बेस कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इट रिटर्न्स बैक, इन अगेन मल्टीप्लाइज 4 into फैक्ट ऑफ 4 minus 1. देन अगेन जाता है, वापस आता है 3 into फैक्ट ऑफ 3 minus 1, 2 into फैक्ट ऑफ 2 minus 1. तो 1 हो गया वहां पे. द मोमेंट इट एनकाउंटर्स आइदर अ 0 और अ 1, इट रिटर्न्स वैल्यू 1. तो ये रिटर्न किसको करता है, टू द लास्ट पॉइंट ऑफ कॉल, टू द लास्ट पॉइंट ऑफ कॉल, जहां से फंक्शन को लास्ट या लेटली कॉल किया गया था वहां चला जाएगा. तो 2 minus 1 जहाँ पे था, देन वहां से वो रिटर्न बैक करना स्टार्ट करेगा इन 1 by 1 करते करते लास्ट जहाँ एक्चुअली जहाँ से स्टार्ट हुआ था फंक्शन 5 into, तो वहां तक पहुंचेगा. तो आई थिंक दैट्स हाउ इट काउंट्स 120 एंड रिटर्न्स द वैल्यू टू द फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है जैसा हम लोग प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, रिकर्शन कैसे ऑपरेट करता है क्या है. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू यूज दैट इन आवर प्रोग्राम. लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, बट यू डोंट हैव टू वरी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा. जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी प्रिपेयर किए हैं वही कॉन्सेप्ट को या वही क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना है कि पाइथन में कैसे दिखाई देगा. प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जहाँ कुछ डाउट्स निकल करके आए. आई हैव ट्राइड टू शो एज मेनी varieties of functions applicable, with parameters, without parameters, different types of function calls, ग्लोबल लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइदर फाइल हैंडलिंग या एक्सेप्शन जैसा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और सॉरी ओओपी का कुछ कॉन्सेप्ट रह गया, क्लास को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, उस टॉपिक को 2 क्लास में कंक्लूड कर देंगे. ओके, एनी डाउट इन दिस पॉइंट? ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड. Thank you so much, sir. Sir.